स्वागत है DRTSPR शो में। मैं डॉक्टर तंगेल्ला शिव प्रसाद रेड्डी alias डॉक्टर TSPR। नमस्ते, आदाब, hello. I welcome you all. DRTSPR channels, DRTSPR channel, Citizens DRTSPR channel, and Environment People DRTSPR channels have entered into the fifth year, having started streaming live even 7 to 10 hours with a simple technology, connecting guests from wherever they are through an interface of DRTSPR channel. We have completed 5 successful years in disseminating information that is in public interest. May 26, 2020, when the entire world was suffering, after my show on Sneha TV, Midday Politics was aborted. Then came MAP TV. Even that too, for reasons everyone knows, was aborted. Then we had to start a show connecting guests from wherever they are, because I was given a free pass to travel from Hyderabad to Kerala, to Pala Kottayam, being son-in-law of Kerala. My wife hails from this place when entire world was suffering. That is the time, with simplest technology, we have started this show to remove fear, to provide correct information by providing information which is truthful, scientific, and logic, because it was COVID time. And I thank all those wonderful people who have been associated with this technically, and those wonderful people in India and overseas who have made this show possible by supporting in the beginning. Once again, I salute them, pranams to them all, and also to wonderful viewers and the wonderful guests who come with all the evidences, because DRTSPR channel's tagline is simple: show or issues as per rule of law, constitution, invoking evidential act. No enmity against individuals, nor animosity against any parties or organizations. And that is why I keep sharing my mobile number 9440465339, to which Google Pay, Phone Pay is attached. Anyone can support. But at the same time, to this number, they can share evidences and connect with me from wherever they are, in India or abroad, in Telangana, Kerala, or elsewhere. I said, I am ready to host you, provided you come prepared, you share the evidences, because we have no agenda except public interest. And that public interest, we try to do it in a legalized way. So that is why this show is more important even today. हम यही कहते हैं कि DRTSPR चैनल्स को 5वां वर्ष है। इसको मई 26 में 2022 में शुरू किया गया। कोविड की समय था। मैं भी एक डॉक्टर और पत्रकार भी हूं। अच्छी जानकारी देने के जो पुष्टि थी, हमने ये चैनल्स द्वारा, DRTSPR चैनल हो, सिटीजन्स DRTSPR चैनल, एनवायरमेंट पीपल DRTSPR चैनल, जब यूट्यूब ब्लॉक कर रहा था, हमने दूसरे भी, रंबल और बिटशूट में भी DRTSPR चैनल नाम से वहां पर भी शोज किया है। तो इसीलिए मैं सभी को आमंत्रित करता हूं कि आप हमें सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। काफी लोगों की कंप्लेंट, सर हम सब्सक्राइब कर रहे हैं, व्यूज जब देख के टिक करते कुछ नहीं हो रहा, आगे नहीं जाता। तो यही तो मतलब है, जब हम सत्यसंधन है, सत्यमेव जयते, क्योंकि शो जो है मुद्दों पर, कानूनी दौर पर, संविधान के दौर पर और आधार के दौर पर है। यह शो किसी के व्यक्ति के खिलाफ या पार्टीज या संगठन के खिलाफ ये షో है ही नहीं। 5 సంవత్సరాలైంది మే 26, 2020లో ఒక డాక్టర్ జర్నలిస్ట్గా ఆ రోజు ప్రజలు తీవ్ర భయభ్రాంతులకు గురైతున్న వేళ DRTSPR ఛానల్స్ మే 26, 2020 ఆవిర్భవించింది। మహానుభావులు చాలా మంది, ఇక్కడున్నవారు, బయటి వారు మొదలు దీని ప్రారంభానికి కారకులైనారు। వారికి అందరికీ కూడా మళ్ళొక్కసారి నమస్కారం। అదేవిధంగా దీన్ని సాంకేతికంగా ముందుకు తీసుకుపోవడానికి చాలా మంది దోహదపడ్డారు। దాంట్లో చాలా ముఖ్యులు ఇక్కడ పాలా, కేరళలో ఉన్నారు। వారికి కూడా మళ్ళొక్కసారి ఈ షో ద్వారా వారిని అభినందిస్తూ, ఏ రోజు కూడా వ్యక్తిగత ద్వేషాలు కానీ, పార్టీలు, సంఘాల పట్ల శత్రుత్వాలు కానీ ఈ షోలు లేనే లేవు। ఎందుకంటే అంశానికి చట్టం, రాజ్యాంగం ఆధారమే మూలం। సో నా నంబర్ కూడా ప్రతి ఒక్కరికి ఇస్తా ఉంటా, 9440465339। మీరు ఏమైనా విభేదిస్తుంటే, మీరు ఎక్కడున్నా కూడా
మిమ్మల్ని షోకు తెచ్చే బాధ్యత నాది. కానీ చట్ట ప్రకారం మీరు అన్ని ఆధారాలతో రావాలని చెప్పి అదే చెప్పుడు ఇప్పుడు కూడా చెప్తున్నాను. అదేవిధంగా ఇదే 9440465339కి గూగుల్ పే, ఫోన్‌పే కూడా ఉంది. మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సపోర్ట్ కూడా చేయండి. చాలామంది సార్ సబ్స్క్రైబ్ చేసినా అది తీసుకోవడం లే, మేము వ్యూస్ ఎన్ని పెట్టినా అది తీసుకోవడం లే అంటే అక్కడనే సత్యం గెలిచింది అని చెప్పడానికి ఈ ఛానల్స్ మరి అతిథులు వారందరూ కూడా ముందుకొచ్చి భయభ్రాంతులను తీసే విధంగా సమాచారాన్ని ప్రజలకు అందిస్తూ వస్తున్నారు. ఇంకా ముందు కూడా అదే విధంగా పోతుంది. కాబట్టి ఈరోజు షో కూడా నేను ఒక ప్రశ్నతో మొదలు పెడతా ఉన్నాను. ప్రధానమంత్రి మోడీ గారు ఆర్ఎస్ఎస్, బీజేపీ వాళ్ళందరికీ కూడా హిందువులు అంటే ఎందుకంటే సింధూర్ అనే మాట మాట్లాడుతున్నారు. మళ్ళీ ఎట్లయితే పుల్వామాలో ఆ రోజు ఎన్నికలకు పోయినరో నేను కూడా హిందువుని, గుడికి పోయే వచ్చాను, ఇప్పుడు షో చేస్తా ఉన్నాను. నేను అదే ఓల్డ్ సిటీలో ఉంటా. అదే ఓల్డ్ సిటీలో హిందువులు ఎందుకు ఇల్లు అమ్ముకొని పోతున్నారు? ఆ ఇల్లు కొనే వాళ్ళు ఎవరైనా సరే వారికి డబ్బు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? మిస్టర్ మోడీ అండ్ అమిత్ షా, బీజేపీ అండ్ ఆర్ఎస్ఎస్ ఎక్కడ ప్రగతి ఉంటే అక్కడ అమ్ముకొని పోవడమేనా? గుడ్లకు నిబంధనలు, మిగతా ప్రార్థన మందిరాలకు నిబంధనలు లేవు. ఓల్డ్ సిటీలో మీరు చూడండి, సంతోష్ నగర్లో ఐఎమ్ కంప్లైంట్ how GHMC has totally violated. There is no setbacks, huge buildings. My complaints are there for the last 3 to 4 years, more than 4 years. No action initiated, but still many buildings have come up. They have even occupied roads. You cannot even walk this side. These things also they have occupied. I am on record. So in such conditions, Hindus were selling their houses and going because you talk about Sindur. What happened Pahalgam? Did you catch hold of anyone? That is why we say, Mr. Modi, who should be held responsible for failed foreign policy, for failed security, if it's internal or borders, again, overall, for failing in policy to protect Indians, as well as the failed foreign policy. No one has supported you, Modi, Mr. Modi. While Pakistan is gaining support, International Monetary Fund, 2.3% India contributes. How is that they have given sanctioned loan during this Sindur war? And as if that is not enough, this is a big breaking news. Russia is in understanding with Pakistan. They have signed an MOU. It is shaming India because the same S-400s you said during Sindur, Russian product, you said they were the ones used like a shield against Pakistan's drone attacks. Now the same Russia has signed MOU with Pakistan. Don't you think this is a failed foreign policy, Mr. Modi, Amit Shah and Jay Shankar? Now who should own the responsibility and resign? आज एक बड़ी सी खबर, रशिया ने, रूस ने पाकिस्तान के साथ एक समझौता किया है. वो कुछ भी हो, कराची में स्टील प्लांट की हो, कुछ भी हो, लेकिन आज तक आंख में आंख पाकिस्तान और रूस ने नहीं देखा था. और हम रूस की S-400 की जो है वो कहते हुए कि ये S-400 हमारे पास है, इससे ही हम पाकिस्तान के ड्रोन को चुनौती दी और हम सुरक्षित है. ऐसा रूस आज पाकिस्तान के साथ समझौता करने का मतलब क्या? हमारी रणनीति हो, विदेश नीति हो या सुरक्षा नीति, मोदी हो या अमित शाह हो या जयशंकर, क्या हमने इसमें फेल नहीं हुआ? సోంచియే. అందు గురించే చెప్తా ఉన్నాం, మన సురక్షితంగా ఉండాల్సినటువంటి నీతి, దేశాన్ని సురక్షితంగా పెట్టాల్సిన నీతి, పుల్వామా టు పహల్గాం ఏమైంది, దానికి ముందు కూడా ఏమైంది? అందరూ అడుగుతుంటారు. కాంగ్రెస్ అవతల పడేసారు కదండి యూపీఏను. కాంగ్రెస్ డిడ్ నాట్ గెట్ ఈవెన్ 10% votes to qualify as an opposition party, opposition leader also in 2014, Mr. Modi. Why still blame Congress? Congress is in no power. So many states, BJP is in power. Then still whom are you blaming, Mr. Modi, Amit Shah and RSS? This is a straight question to you. What development? क्या हिंदुओं को मिला है? यूनिफॉर्म सिविल कोड हुआ है क्या? पॉपुलेशन कंट्रोल बिल कुछ लाया गया क्या? और हमारे देवल सरकार के कब्जे में, जब चर्चस कब्जे में है सरकार में, मस्जिद कब्जे में है सरकार के, क्यों केवल देवल है? मिस्टर मोदी बताना पड़ेगा, अमित शाह, आरएसएस. और कितने दिन ये, और साथ ही साथ कितने लोग मारे गए पुलवामा में हमारे आर्मी के, आज पहलगाम में जो हमारे भाई बहन
जो भाई मारे गए, इसके जिम्मेदार क्यों कौन है? अमित शाह नहीं है क्या? क्यों नहीं है? और उसका बेटा आज इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल चेयरमैन कैसा बना? यूनानिमसली वो पाकिस्तान के सपोर्ट से या नहीं? आप बोलना चाहिए। जब पाकिस्तान के साथ अमित शाह के बेटा जय शाह इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल चेयरमैन बन सकता है, क्यों हमारी विदेशी नीति में पाकिस्तान को वहीं रोक नहीं सका? दुबई में किस तरह जय शाह और अनुराग ठाकुर, शहीद अफरीदी सबसे मिलके वहां तमाशा कर रहे थे, आप देखे ना। और वही देखिए आज भी सिंदूर की बात करते हैं मोदी जी और अमित शाह जी। क्यों आईपीएल के मैचेस रोज लाइव टेलीकास्ट हो रहा, हंगामा हो रहा, बेटिंग क्यों हो रहा वहां पर? क्यों आप रोक नहीं सके? आईपीएल इतनी जरूरी है क्या? जब इतने लोग वहां मारे गए पहलगाम में, क्यों आप चुपचाप है? कैसे आईपीएल को चलने दिया? और कैसे आप सिनेमा एक्टर से मिल रहे हैं मोदी जी, और कैसे आप इलेक्शन के रैली में जाके इसकी पुष्टि करते हैं? और आपको युद्ध रोकने के लिए कौन कहा? अमेरिका क्यों कहा? आप युद्ध रोकने की चाल अमेरिका के साथ केवल अदानी अंबानी के बिजनेस व्यापार के लिए आप किया या नहीं? इसके बदौलत आज रूस ने पाकिस्तान के साथ समझौता कर रहा। ये कितनी बड़ी क्षति है, क्योंकि रशिया जो है हमारे साथ हर समय में था, और रशिया के साथ गठबंधन होने के बाद ही हम भी हमारी निजी संस्थाओं को, और आप ही ने कहा कि S-400 वो रूस की है या नहीं, उसकी बदौलत आज सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर में आपने कहा कि हम ड्रोन को रोक सके। तो ऐसे रूस आज पाकिस्तान के साथ समझौता करने का मतलब क्या है? आपकी रणनीति हो, सुरक्षा नीति हो, विदेश नीति हो, उसमें आप फेल हो गए। इसीलिए कौन जिम्मेदार? मोदी जी, अमित शाह जी, या जयशंकर जी? और हिंदुओं की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में और मेदक में किस तरह हमारे गायों को खत्म करके वो मांस बाहर भेजा जा रहा है। ये शर्म की बात है, और वो पूरे हिंदू है। इसके ऊपर आपने क्या किया है? आर्टिकल 48 भी है ना, आपने कुछ लागू किया है? क्यों आप बंद नहीं करवा सके? आप जो गौ माता को जिस तरह खत्म किया जा रहा है, और उसकी मांस बाहर बेचते हो, आप उसका व्यापार करते हो, और ऐसी संस्थाएं बीजेपी को इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के द्वारा पैसे देता है चुनाव में लड़ने के लिए। क्या ये शर्म की बात नहीं है? इज इट नॉट शेमफुल? Those abattoirs near Medak and Uttar Pradesh, almost every city has that. They trade with cows, unfortunate cow skin, and the meat is processed and sent abroad. And there are also so many illegalities. How safe that meat is, I'll come back to that. Only Hindus are there. Now, you say Hindu government, Sindur की बात करते हो, why you could not stop cow slaughter? This is a straight question to you. As a Hindu, I'm asking you, why still Hindu temples are under the control of endowments governments, when masjids and churches are not? Nothing against them. But this is the discrimination. You claim to be a Hindu government, majority people, but you have done nothing except for gaining votes and seeing to that Adani's, Ambani's finish off all public sector units. They become unique. If I'm wrong, anyone can challenge me. How last 11 years Adani has grown to become billionaire and entering into Forbes list, and how Ambanis were allowed to finish off BSNL. They owe so much of money. They owe so much of money. How Ambani is allowed to, even the fashion industries taken over by Ambanis. Hitherto, Big Bazaar, so many used to be there. Monopoly now, Adanis and Ambanis. What is this nonsense? And who are they? Are they bigger than India? And where is the competition? And you have seen Rafael jets. I did a show. Why did they change the affidavit? Now those Rafales were brought down, and Subramania Swamy clearly alleges that they were inferior. And Modi, under Modi, you cannot inquire or investigate. That is a direct question to you, Mr. Modi, BJP, and those supporting Mr. Nitish Kumar and Chandrababu Naidu. You will have to be answerable. You have to answer. Nation will make you to answer. 5 jets were fell down. And is that the reason why America truce accepted? Is that the reason why Adani is already in a case with America? And just because of business deals,
this Operation Sindoor has come down? Is that the reason why Pakistan gaining support? International Monetary Fund during Operation Sindoor, they have given money to them. India has got 2.3% share. Shame. And now World Bank is also in the process of giving loan to Pakistan. And in between, this big shocking news that Russia has entered into an MOU with Pakistan to set up something like steel ore in Karachi. And the same S-400 supplied by Russia we have been using and touting to the world. We could stop drone attack. We are so stealthy corridor by S-400s. Now, what is your response, Mr. Modi? Is it only business interest, not the precious lives which are being lost? Pulwama to Pahalgam. And as if this is not enough, in the India-Pakistan border near Gujarat, how is that you have allowed Adani to set up a solar and wind project? How can that be? That means you want to protect those interests, while in Poonch, after your surgical strike, in Poonch or Rajouri, so many precious lives have been lost. Mr. Amit Shah admitted, at least. When he has admitted, don't you think he should resign after Pulwama failure, after Pahalgam failure, after Rajouri and Poonch shellings, many precious lives gone, like what was happened in Pahalgam? Then who is responsible? Is it not Amit Shah? Failed foreign policy is not Jaishankar? How is that Mr. Jaishankar informs Pakistan prior to Operation Sindoor, and how this has become a big joke in Pakistan? आंख मार के वो कहता है कि आप सब निकाल लो वहां से, हम आके डाल के जाएंगे. Is it not affecting our morale of our Indian army? How they went into Pakistan, even then also surgical strike, 8 kilometers into Pakistan in 1971, and how Pakistan was divided to create Bangladesh. Why the same thing has not happened after Pulwama and Pahalgam? Is business interest more than people of India, sovereignty of India? That is why straight, who will be held responsible? Is it Mr. Prime Minister Modi, Home Minister Amit Shah, or Foreign Minister Jaishankar, or those supporting parties, Bihar Nitish Kumar, or Telugu Desam Party and Chandrababu Naidu? Let me play you some videos. It is shaming, damn shaming. I feel sorry. My heart goes without those who lost their precious life. And see how BJP MP claims women husbands were killed in Pahalgam terror attack lacked spirit of warriors. Bharatiya Janata Party MP Ramchandar Jangra on Saturday claimed that the women whose husbands were killed in the terror act in Jammu and Kashmir's Pahalgam did not have the spirit of warriors. Let this warrior go and fight in the border. Addressing an event in Haryana's Bhiwani, the Rajya Sabha MP said that women whose husbands were killed should have acted like Virangna or warrior women, PTI reported. He also claimed that the casualties would have been less had the tourists fought back. The remarks led to a backlash from opposition leaders who demanded that he should be expelled from BJP. Already, Deputy Chief Minister of Madhya Pradesh Supreme Court did constitute a sit on his remarks against the honest army officer, Ms. Qureshi, and this gentleman being an MP, that to Rajya Sabha, he is stating he should be sent to the border. All those people who have been crying hoarse, all political party activists, they should be sent to border if they speak nonsense. They try to incite people. Let them go to borders and fight. Why do all this dharnas and all here? Go to borders. Instead of discussing in the panchayats, municipalities, assemblies and parliament, people are making a tamasha. क्यों आप पंचायत से लेके पार्लियामेंट में चर्चा क्यों नहीं करते? बाहर आके ये तमाशा क्या है? ये सभी लोगों को आप बॉर्डर भेजिए, लड़ने दीजिए, तब इनको पता चलेगा. इट इज अ शेम. ये शर्म की बात है. I wanted to show you the Russian effect first. How shameful this is. Then after that, I'll
because today's show, yeah. पाकिस्तान ने रूस के साथ किया $2.6 बिलियन का समझौता। मोदी सरकार की असफल विदेशी नीति का खामियाजा उठा रहा है भारत। रशिया shocks India, Putin's big deal with Pakistan. Russia Pakistan bonhomie amid India's diplomatic offensive. They are sending MPs everywhere to the world with public money. Those fellows, those MPs should come back. Shame. You don't want to discuss in parliament assemblies. How dare you go there? Russia has signed deal with Pakistan to revive Soviet era Pakistan steel mills near Karachi. This is a big story based on this show. Now what RSS, BJP and all those who have been trolling have to say. आप क्या कहना चाहते हैं आज आप बताइए। इस तरह होगा विदेश की नीति? सार्क को खत्म कर दिया है। कोई एक देश, नेपाल से लेके भूटान से लेके कोई एक देश भी आज हमको सपोर्ट दिया है ऑपरेशन सिंदूर के? इतने देश घूमते हैं रोज, जब कभी भी वो पार्लियामेंट में कम, विदेश में ज्यादा। फिर क्या हुआ? S-400 का जो रशिया की रूस ने जो हमको दिया है, उससे ही ऑपरेशन सिंदूर की बात कहते थे हम। S-400 के जरिए पाकिस्तान के ड्रोन्स को रोका है। आज वही रूस पाकिस्तान के साथ 2.6 बिलियन की एक समझौता की है। इसका जवाब क्या है मिस्टर मोदी, अमित शाह और नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, जो आप सपोर्ट करते हैं इस सरकार को? And as if this is not enough, World Bank. They have a 10-year plan for Pakistan. They will give $40 billion. This is a country whose leaders say we'll eat grass but get a nuclear bomb. This is a country that is surviving on bailouts but increasing its military budget. Does the World Bank really believe that Pakistan would prioritize childhood stunting or climate resilience over its terror factories? By investing in Pakistan, the World Bank is investing in the terrorism they export. This is the reality of Pakistan, where terrorists are shielded by the state, where the army chief is on posters alongside terror chiefs. Yet the World Bank calls Pakistan a development partner, and it calls itself a bank. Well, if you're a banker, would you finance a terror regime? And this one is riddled with red flags. Pakistan is one of the world's most vulnerable economies. It owes some $131 billion in external debt. If you're a banker, would you commit $40 billion to such a player? We all know the answer. But the World Bank is playing blind to Pakistan's reality, just like the IMF. The World Bank calls it a long-term partnership. But let's call it what it is. Long-term terror sponsorship. Terror state Pakistan is getting another cash boost. First, it was the IMF, the International Monetary Fund. And if that wasn't bad enough, here's the next one. This is courtesy the World Bank. They have a 10-year plan for Pakistan. They will give $40 billion. This is a The World Bank has unveiled $40 billion investment plan for Pakistan, calling it a country partnership framework. This comes just months after Pakistan-backed terrorists killed 26 civilians in India. Despite Pakistan's collapsing economy and soaring defense spending, global institutions like the IMF and World Bank continue to funnel funds into Islamabad. Critics warn this isn't just aid, it is indirect financing of terrorism, with ministers seen alongside known extremists and the military expanding its grip. Where does this money really go? Know this, it is an economic warfare. The point is the West is trying to crumble Indian economy by engaging in war so that India will be dependent on the West and be puppet as Indian economy is growing higher. So this is what is all about. So ये बड़ी मुद्दा है। वर्ल्ड बैंक में भी 40 बिलियन की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करने की, ये कहते हुए कि वो प्रगतिशील देश है। क्या ये प्रगतिशील देश है? कहां से आ रहे आतंकवादी?
तो ये भारत की रणनीति हो, सुरक्षा नीति हो या विदेश नीति हो, उसका असफलता आज इसमें दिखाई दे रहा है। आप जब 2018 तक पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट था, 2018 के बाद पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट के दर्जा से क्यों निकाला गया? क्या ये बड़ी 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 एक विकल्प मोदी और अमित शाह बीजेपी गवर्नमेंट के सामने नहीं था? क्यों वो लोग चुपचाप बैठे थे? टिल 2018 पाकिस्तान वाज अ टेररिस्ट स्टेट. How is that after 2018 Pakistan came out of the terrorist state mark? Is it not the biggest failure of Modi and Amit Shah government? And how Bihar Nitish Kumar and Chandrababu Naidu are keeping quiet when it comes to the security of the people? India means people. The security of India is compromised. That is why I'm making this show today. Who is responsible? Mr. Modi. Now here the Congress comment. As usual, Post Pahalgam, during Operation Sindhu, not one country called Pakistan a terrorist state. That's the result of your failed foreign policy. Then you launched Operation Sindhu. Not one country issued a statement in your favor. Our traditional friends did not issue a statement in our favor. And now, after Operation Sindhu, Kuwait has lifted visa restrictions from Pakistan. Iran, UAE, Gulf are signing MOUs with Pakistan. And the most shocking aspect is that yesterday, Russia has signed an MOU with Pakistan to revive their very old steel mill, PSM, Pakistan Steel Mill, wherein Pakistan will get $2.6 billion from Russia. And Russia has been our traditional age-old friend, decades-old friendship. Where is it gone? This is the result of your failed foreign policy. The result of our failed foreign policy was seen post Pahalgam, during Operation. Now, this is the biggest statement. Pakistan shot down 5 Indian Rafale fighter jets. There has been massive corruption in the Rafale deal. And as long as Modi is Prime Minister, he won't allow any investigation into it, Dr. Subramanian Swamy. I have done this during midday politics. We have exposed how affidavit was changed, how COG insinuation after which the COG report was submitted. When Supreme Court should have changed its judgment, it did not do in that favor. And Congress, that time, Chaukidar Chor, that took center stage, and Congress messed up the entire thing. When you change an affidavit, how is that the same judgment prevails during Rafale 1? We said, how could the massive change in the deal happens? And believe me, the bankrupt Anil Ambani was given 30,000 crores offset, killing Hindustan Aeronautics Limited, which was preparing jets. Even Air Force chief was on record. I don't want to play that. He's clearly stating the requirement was there and no delivery on time to Indian Air Force. There are shortage. Make in India. Is it not the huge defense budget? What happened to that? Why Modi government did not allow HAL or others to manufacture by making India to become self-reliant? Is it not the failed policy? Where did that money go? IAS chief questioning. It is there in the public domain, not me. All those who want to troll, it is there in the public domain, shamelessly. Our security is also compromised in not allowing funding to such organizations, whether it is right from DRDO to HAL, so that they were not able to deliver on time the required fighter jets or something to Indian Air Force. Is it not a shame? And that is why this show is more important. And here again, let me hear him. लिए काम करने वाले कुछ लोग, कुछ जासूस पकड़े गए. पहले भी खबर आई थी, डीआरडीओ का एक प्रदीप कुरुलकर संघ से बड़ा जुड़ा हुआ था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, पाकिस्तान को कुछ सूचनाएं गोपनीय देता था. क्या हुआ उसका? आपने उसके बाद सुना, हमने प्रेस वार्ताएं की, बार बार उस मुद्दे को उठाया. क्या हुई? लिपापोती हुई? हो क्या रहा है प्रदीप कुरुलकर? तो आप बीच में कोई खबर आती है कि भाई आईएसआई के लिए कोई ध्रुव सक्सेना काम करते हुए पकड़ा गया भारतीय जनता पार्टी का,
फिर आता है प्रदीप कुरुलकर, डीआरडीओ के साइंटिस्ट हैं, संघ से बड़े जुड़े हुए हैं, पूरा दूसरी तीसरी पीढ़ी संघ के साथ जुड़ी हुई है। क्या हुआ उनका? ये है क्या? ये क्या मुखबिरी का इतिहास है? ये क्या रिश्ता है आपका पाकिस्तान? ये हमें जानना जरूरी है, देश को जानना जरूरी, क्योंकि आज आप तमाम संस्थाओं पे कब्जा किए बैठे, इसलिए ये जानना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो एक लाइन बड़ी अच्छी हुई जो आज के लिए बिल्कुल उपयुक्त है कि समस्या बॉर्डर पे नहीं है, समस्या दिल्ली में। उसी समस्या के बारे में आज हम आपसे चर्चा कर रहे हैं कि ये समस्या दिल्ली में है, जो पाकिस्तान को पहले ही सूचित कर देती है कि पाकिस्तान हम आ रहे हैं। थोड़ा देख लीजिए। Before we play that, I wanted Jaishankar's video to be played so that you'll understand. ऑपरेशन सिंदूर की सूचना पहले ही पाकिस्तान को दे दी थी। मुखबिरी की ये कहानी आप खुद सुने। At the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. We are not striking at the military. So the military has an option of standing out and not interfering in this process. They chose not to take that good advice. जयशंकर ने पाकिस्तान के लिए ये मुखबिरी क्यों की? इसकी वजह से हमारे जवानों की जान खतरे में क्यों डाली गई? पाकिस्तान को पहले ही खुफिया जानकारी लीक कर देने की वजह से हमारे देश के कितने एयरक्राफ्ट का नुकसान हुआ? ये कोई गलती नहीं थी, बल्कि गुनाह किया गया है। देश के साथ धोखा है ये। क्या मोदी सरकार इन सवालों के जवाब देने की हिम्मत कर पाएगी? विदेश मंत्री जयशंकर ने कबूल किया है कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की सूचना। Why still no action against Jaishankar? Why he has not been removed? Is he not held responsible for providing this information to Pakistan and failed foreign policy? You have seen Russia and all. पहले ही पाकिस्तान को दे दी थी। मुखबिरी की ये कहानी आप खुद सुने। At the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. We are not striking at the military. So the military has an option of standing out and not interfering in this process. They chose not to take that good advice. जयशंकर ने पाकिस्तान के लिए ये मुखबिरी क्यों की? इसकी वजह से हमारे जवानों की जान खतरे में क्यों डाली गई? पाकिस्तान को पहले ही खुफिया जानकारी लीक कर देने की वजह से हमारे देश के कितने एयरक्राफ्ट का नुकसान हुआ? ये कोई गलती नहीं थी, बल्कि गुनाह किया गया है। देश के साथ धोखा है ये। क्या मोदी सरकार इन सवालों के जवाब देने की हिम्मत कर पाएगी? विदेश मंत्री जयशंकर। And then what? In an interview to US, Well, the US was in the United States. I mean, obviously there were the US, the Secretary of State Rubio and Vice President Vance had called up. Rubio had spoken to me. Vance had spoken to our Prime Minister. They had their view and they were talking to us and they were talking to Pakistanis as indeed were some other countries. Yeah. And where was the U.S. in this process? The U.S. was in the United States. I mean, obviously there were the U.S. The Secretary of State Rubio and Vice President Vance had called up. Rubio had spoken to me. Vance had spoken to our Prime Minister. They had their view and they were talking to us and they were talking to Pakistanis as indeed were some other countries. Yeah. And So where ये was- बड़ी आधार है आपके लिए, आप जान सकते हैं, ये पब्लिक डोमेन में है। अमेरिका ने किस तरह भारत और पाकिस्तान के बीच में आया, आज उसका फल जो है, मिडिल ईस्ट मुस्लिम कंट्री सभी पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है रूस के साथ, और रूस की टेक्नोलॉजी S-400 के साथ ही हम तमाशा बना रहे थे। ये बड़ी 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 खबर आज की शो की है। क्या जयशंकर, और अभी ये भी सुनिए अमित शाह जी की। दूसरे दिन भारत जम्मू कश्मीर इसका सबसे बड़ा नुकसान
हमारे पूंछ को पूंछ में शायद राजेश के बाद के साथ साथ कई जगह रियायत पाकिस्तान ने की। पाकिस्तान ने क्या किया? दूसरे दिन भारत जम्मू कश्मीर में रियायत इसका सबसे बड़ा नुकसान हमारे पूंछ को पूंछ में शायद राजेश के साथ साथ कई जगह रियायत पाकिस्तान ने की। पाकिस्तान ने क्या किया? ये शर्म की बात नहीं है क्या? हम तो पहले ही शो में आपको बताया रजौरी पूंछ में कितने लोग मारे गए हैं। आज आपने कबूल किया है, लेकिन जयशंकर ने पहले ही पाकिस्तान को एक समाचार देता है कि हम ऑपरेशन सिंदूर करने वाला है। तो इसका मतलब पाकिस्तान आपको चुपचाप चॉकलेट देगी क्या? आप और उनके बीच में समझौता क्या था? यही राहुल गांधी ने प्रश्न कर रहा था, क्यों पार्लियामेंट लेके पंचायत तक हम चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं इसके ऊपर? वो बड़ी भूल ये थी या नहीं? और आप जब ऑपरेशन सिंदूर कर रहे थे, पहले ही समाचार पाकिस्तान को आपने दिया था। आपको ये तो भी आपके इसमें ध्यान में रहना था कि पाकिस्तान चुप नहीं बैठेगा। वो पूंछ हो रजौरी हो, इसके पहले भी कर रहा था वो बॉर्डर एरियाज में शेलिंग। ये कोई नहीं थी, लेकिन इतनी बड़ी पैमाने पे नुकसान कभी नहीं हुआ, इतने लोग मारे गए। आप ही ने कबूल किया है। तो ये आपकी रणनीति कहाँ गई? सुरक्षा नीति कहाँ गई अमित शाह जी? आपका बेटे के लिए इंडियन क्रिकेट काउंसिल चेयरमैन, पाकिस्तान आपको सपोर्ट करता है और वो यूनानिमस बनता, कोई वो क्रिकेट प्लेयर ही नहीं था। तब नीति कैसे कहां से आई अमित शाह जी? आज आप वो नीति को क्यों अपना पाए? और आज भी देखिए आईपीएल की मैचेस हर जगह हो रही है, पूरे लोगों इस तरह की भीड़ जा रही है और लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है, ताकि पहलगाम में कुछ हुआ ही नहीं, रजौरी और पूंछ में कुछ हुआ ही नहीं। अमित शाह जी क्यों नहीं रुकवा पाए आप आईपीएल? और आप क्यों इलेक्शन रैली में जा रहे हैं? इलेक्शंस इंपॉर्टेंट है क्या? आईपीएल मैचेस इंपॉर्टेंट है क्या? क्या देश के इतने नागरिक मारे गए, आज पाकिस्तान को पूरी दुनिया भर की उसको सपोर्ट मिल रहा है। क्या ये हम हमारी सुरक्षा नीति हो या रणनीति हो या विदेशी नीति हो, क्या हम उसमें असफल नहीं हुए? फिर इसका उत्तरादित्य कौन लेता है? प्राइम मिनिस्टर मोदी, अमित शाह जी, या जयशंकर, या जो पार्टी सपोर्ट कर रहे हैं बिहार नीतीश कुमार और तेलुगुदेशम पार्टी चंद्रबाबू नायडू? देशवासी आज आपको प्रश्न कर रहा है, क्योंकि आप डरा के धमका के आरटीआई को खत्म कर दिया। कोई समाचार नहीं देना चाहते हैं। क्यों नहीं देना चाहते हैं? इसके वजह से ही। So now this is an open admission. He is openly admitting that Rajouri and Poonch shellings after Sindoor, Pakistan has done killing so many innocents. Is it not because of prior information which you gave and you thought they were in understanding with you? Is it not a fact that after 2018, Pakistan was removed as a terrorist state in the entire world? Why? Is it just because of Adani and Ambani's? They have to answer. Business? That also I'm going to show you. Now this interview you hear. कितने गिरे हैं बताइए? पांच पाकिस्तान ने अपने जहाज को बेचकर गिराया था हमारा। ओके, उसमें कुछ चाइना का भी रोल था सर? चाइना के प्लेन्स तो चाइना के ही थे। हाँ, चाइना के लोगों ने नहीं किया। चाइना ने जो हवाई जहाज दी थी वो बहुत बढ़िया हवाई जहाज थी। और
जो फ्रांस के जो थे वो उतना बढ़िया नहीं थे, और हमारे उनके जो भाई जहाज है उन्होंने 5 को गिराया था। आपका मतलब रफेल ने अच्छा काम नहीं किया? राफेल तो पर्याप्त नहीं है हमारे देश के लिए। वो उसमें क्या क्या भ्रष्टाचार हुआ ये तो दूसरी बात है। हाँ, मोदी रहते हुए हम इस पर जांच नहीं कर सकते क्योंकि होने नहीं देगा वो। लीडर ऑफ अपोजिशन ने एक बात बोली कि हमारे जहाज गिरे हैं, कितने गिरे हैं बताइए? 5 पाकिस्तान ने Now, what is that Modi government has to say? Why are you trolling them? Discuss it in the parliament, right from panchayat to parliament, all assemblies. So many governments are headed by BJP in all the states. Deride them, expose them. Whether it is Rahul Gandhi or Dr. Subramania Swamy, or now Amit Shah is admitting now in Rajouri and Poonch, why he could not do it before launching Operation Sindoor. Why you did not expect that? Is it not security failure? Why he is not resigning? And why Jaishankar has passed information about Operation Sindoor, risking the lives of so many soldiers? And is it not that because of that, now today they are claiming they have shot down 4 Rafale jets with enhanced budget they bought? Why there should not be an inquiry? There should not be any discussion? Why BJP is keeping quiet? Instead, it's trolling, stating that they are supporting Pakistan. Now I am going to show you how they were trolling Indian foreign minister. दूसरा वीडियो चलाइए। हम पर बड़ा बोला जाता है कि अरे राहुल जी का बयान पाकिस्तान के टीवी पे चल रहा है, हमारी सहयोगी सुप्रिया जी के लिए आया पाकिस्तान चला रहा है, मेरे लिए आया पाकिस्तान के टीवी पे चल रहा है। अब मैं बताता हूँ पाकिस्तान के टीवी कि हम मजबूर हैं, हमने ये करना है, तो फिक्र की कोई बात नहीं है। हमारे इरादे को जंग जंग के नहीं है। हाँ, मिलिट्री के आपको निशाना नहीं हम टेररिस्ट के 4-5 ठिकाने हैं, वहाँ एक एक ठाक कर देंगे। हाँ, और आंख हमारी के निकाल लो लोगों वहां से। जी, बताने का तो यही वहाँ तो यही तनकीद की जा रही है कि आपने तो अलर्ट कर दिया भाई। तो लाएगा फिर वहां से, अगर कोई था वहाँ, हाँ, बच्चे थे तो उनको निकालिए, फिर भी कुछ रह गए, फिर भी मारे गए, सिविलियंस मारे गए। तो इनका ये कहना है कि हमने तो आपको बता दिया कि हम आ रहे हैं और आप, तो यार अगर सजा देनी थी तो ऐसे करते हैं। तो इस वक्त ये पहले दिन से ये फरेब थे, ये सब एक ड्रामा था। ये अवाम को गुमराह कर रहे थे, अपने अवाम को, और हमारे साथ जंग नहीं करना चाहते थे। अच्छा, अवाम को कह रहे थे हम इंतकाम करेंगे, हम जंग करेंगे, हम तो सबक सिखाएंगे। की सबक है? तुसी रुपए कहते हो आ रहे हो, आ जाओ, की गल यही किया ना जी। ये आप देख रहे हैं जयशंकर जी के चर्चे पाकिस्तान में टीवी पर चल रहे हैं, हंसी उड़ाई जा रही है हमारे मुल्क की। क्या बर्दाश्त करेंगे हम और आप? इस तरह से हमारे देश 75 साल का एक बहुत, मैं कहूंगा, समृद्ध हमारी एक परंपराएं रही हैं, कन्वेंशंस रही हैं, एक रूल ऑफ लॉ है, डिप्लोमेसी है, सिद्धांतों पर हमारा देश चलता है। हम खुद कभी युद्ध नहीं करते, बिल्कुल सही बात है। हम सिर्फ रिटेलिएशन करते हैं, अपने इंटरेस्ट का प्रोटेक्शन करते हैं, हम अपने हितों को की रक्षा करते हैं। और उसके बाद जयशंकर इस तरह का बयान दें जो पाकिस्तान में और पूरे देश में, पूरे विश्व में हमारी हंसी उड़ रही है। इसलिए राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि आप जवाब दीजिए इस फोर वार्निंग से। ये जो आपने पहले ही पाकिस्तान को बता दिया, इससे देश को क्या नुकसान, ये हमारा लिए जानना बहुत जरूरी है। देश के कितने हवाई जहाज गिरे, देश को क्या नुकसान हुआ और कितने आतंकी बच के भाग गए, ये जानना हम सबके लिए बहुत। अब this is foreign delegation, our prime minister going abroad, and huge parties and huge events and huge roadshows happening, especially in America. Kya hua? What happened? What happened? That's where this Rahul Gandhi's question comes in. Why didn't a single country back us in condemning Pakistan? Not one single country, including the United States of America. And worse is, why are we hyphenated with Pakistan? We're completely hyphenated with Pakistan. India and Pakistan should show restraint. India and Pakistan should sit and talk. India and Pakistan should talk to each other. We are proud of India and Pakistan that they showed restraint. Why are we being hyphenated with India and Pakistan? They started it.
They are the hub of terror. And it is not that you require a delegation to go and tell this to the world knows it. But yet we have been hyphenated with Pakistan. I mean, can you imagine Trump? Can you imagine United States being hyphenated with Mexico? United States and Mexico should show restraint. United States and Mexico should sit and talk. United States and Mexico should talk to each other, build a bridge. And we are proud of United States and Mexico that they didn't go for war. What would have United States told you? United States would have told you to go take a walk. He would have called you a madman. Trump though definitely would have called you a madman. He would have asked you, what are you hyphenating us with? Mexico? Correct? Same way. We were supposed to be the Vishwaguru. We were supposed to be the fastest growing economy. We were supposed to be the fourth largest economy in the world. We were supposed to be a country which is going to be superpower. And today we are being hyphenated with Pakistan, who everybody said is a country that's going down the drain, a country that is a rogue country, a country that may not last for next 10 years, a country that is completely dilapidated, a country that is dysfunctional, country that is gone. That, and to a lot of extent, a lot of things are true also. And we are hyphenated with that country. I'm showing you more and more evidences so that you, and I'll show you how many trips. Now, this is a big question. This also, they have BJP has Mallikarjun Kharge, Congress Adhyaksh. PM Modi कश्मीर इसीलिए नहीं गए क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसियों ने उन्हें वहां जाने से मना किया था. केंद्र सरकार ने टूरिस्ट को पहलगाम जाने से मना क्यों नहीं किया? अगर मोदी चाहते तो लोगों को वहां जाने से रोक देते तो 26 जिंदगियां बच सकती थी और ये छोटा युद्ध ऑपरेशन सिंदूर भी नहीं होता. Why BJP is keeping quiet? Why Chandrababu Naidu is keeping quiet supporting BJP? Why Bihar Nitish Kumar is keeping quiet? Why don't you discuss and expose him in the parliament or from panchayat to parliament, putting facts? Is it not true that Prime Minister who was supposed to visit Kashmir, all of a sudden he cancels and he flies to Saudi Arabia? क्या ये सच नहीं है? वो लास्ट मिनट में कश्मीर जाने से उसको कैंसिल किया और सऊदी गया है. Why government is silent on this? So they are leaving all such type of things. Now you listen to this lady. But even after 89 foreign trips and visiting 73 different countries, जब हमें पाकिस्तान को एक्सपोज करना था तो not a single country came forward to support us. पूरी दुनिया के सामने IMF ने टेरर हब पाकिस्तान को $1.4 बिलियन का लोन दे दिया और किसी एक भी कंट्री ने पाकिस्तान के अगेंस्ट हमें सपोर्ट नहीं किया. Instead, they all voted in favor of Pakistan. So it's time to think. जब हमारी आर्मी टेररिस्ट के खिलाफ जंग लड़ रही थी, जब हमारी आर्मी ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया था, तब अमेरिका ने बीच में आकर सीज फायर डिक्लेयर कर दी. मोदी इन 11 सालों में 10 बार अमेरिका गए. So what has been the point of these foreign visits? Did India gain any major benefits? Or were these trips only planned so that Modi could travel the world and get pictures there? 11 साल हो गए इस देसी कोलंबस को दुनिया के चक्कर लगाते. But even after 89 foreign trips and visiting 73 different countries, जब हमें पाकिस्तान को एक्सपोज करना था तो not a single country came forward to support us. पूरी दुनिया के सामने IMF ने टेरर This already अपने जहाज को बेचकर किराया था हमारा. उसमें कुछ चाइना का भी रोल था सर? चाइना के प्लेन्स तो चाइना के ही थे. हाँ, चाइना के लोगों ने नहीं किया. चाइना ने जो हवाई जहाज दी थी वो बहुत बढ़िया हवाई जहाज थी. और जो फ्रांस के जो थे वो उतना बढ़िया नहीं थे. और हमारे उनके जो हवाई जहाज है उन्होंने 5 को किराया था. आपका मतलब रफेल ने अच्छा काम नहीं किया? रफेल तो पर्याप्त नहीं है हमारे देश के लिए. वो उसमें क्या क्या. And this also again because many were demanding to play. कल खबर आई कि ISI के लिए काम करने वाले कुछ लोग, कुछ जासूस पकड़े गए. पहले भी खबर आई थी
DRDO का एक प्रदीप कुरुलकर I just wanted to play the संघ से बड़ा जुड़ा हुआ था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से। how it was ridiculing. This I've already shown you. Now what Adani, how he is gaining? Is it for the हो गया, आप सोच भी नहीं सकते हो। तो गुजरात में इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के पास एक सोलर प्रोजेक्ट लाया गया। इस एरिया और प्रोजेक्ट का नाम था खावड़ा। ये प्रोजेक्ट गुजरात सरकार ने डिसाइड किया कि किसी PSU यानी सरकारी कंपनी को देंगे, तो इसे दिया गया SECI यानी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को, और इसे 23,000 हेक्टेयर जमीन अलॉट की गई। अब अप्रैल 2023 को दिल्ली में एक मीटिंग होती है जिसमें डिफेंस मिनिस्ट्री, इंडियन आर्मी और बाकी ऑफिशियल्स शामिल होते हैं। तब तक आप इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर के पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना सकते थे, लेकिन इस मीटिंग में ये डिसाइड होता है कि सिर्फ 1 किलोमीटर बाद ही विंड मिल और 2 किलोमीटर बाद सोलर पैनल लगाए जा सकते हैं, और ये होते ही ये प्रोजेक्ट 10 गुना ज्यादा प्रॉफिटेबल हो जाता है। लेकिन फिर कुछ अनप्रेसिडेंटेड होता है। SECI इस प्रोजेक्ट को सरेंडर कर देता है और सरकार ये प्रोजेक्ट अडानी को अलॉट कर देती है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि SECI के सरेंडर करने के 2 हफ्ते पहले अडानी ने सरकार को ये प्रोजेक्ट उसे देने का लेटर लिखा था, और बाद में USA में इसी प्रोजेक्ट को लेकर अडानी पर घूस देने के रिपोर्ट आए थे। यानी इनडायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने देश के बॉर्डर रूल्स अडानी के लिए चेंज कर दिए, जिससे देश की सिक्योरिटी पर भी असर आ सकता है। अब आप इस न्यूज से शॉक नहीं हो सकते, क्योंकि अडानी ने मोसाद यानी इजराइल की खुफिया एजेंसी तक का यूज किया है। अब ऐसी खबरें आपको मीडिया तो बताएगा नहीं, तो सपोर्ट करने के लिए फॉलो जरूर कर लेना। अडानी कितना पावरफुल हो गया आप सोच भी नहीं सकते हो। तो गुजरात में इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के पास एक सोलर प्रोजेक्ट लाया गया। इस एरिया और प्रोजेक्ट का नाम था खावड़ा। ये प्रोजेक्ट गुजरात सरकार ने डिसाइड किया कि किसी PSU यानी सरकारी कंपनी को देंगे, तो इसे दिया गया SECI यानी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को, और इसे 23,000 हेक्टेयर जमीन अलॉट की गई। अब अप्रैल 2023 को दिल्ली में एक मीटिंग होती है जिसमें डिफेंस मिनिस्ट्री, इंडियन आर्मी और बाकी ऑफिशियल्स शामिल होते हैं। तब तक आप इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर के पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना सकते थे, लेकिन इस मीटिंग में ये डिसाइड होता है कि सिर्फ 1 किलोमीटर बाद ही विंड मिल और 2 किलोमीटर बाद सोलर पैनल लगाए जा सकते हैं, और ये होते ही ये प्रोजेक्ट 10 गुना ज्यादा प्रॉफिटेबल हो जाता है। लेकिन फिर कुछ अनप्रेसिडेंटेड होता है। SECI इस प्रोजेक्ट को सरेंडर कर देता है और सरकार ये प्रोजेक्ट अडानी को अलॉट कर देती है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि SECI के सरेंडर करने के 2 हफ्ते पहले अडानी ने सरकार को ये प्रोजेक्ट उसे देने का लेटर लिखा था, और बाद में USA में इसी प्रोजेक्ट को लेकर अडानी पर घूस देने के रिपोर्ट आए थे। यानी इनडायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने देश के बॉर्डर रूल्स अडानी के लिए चेंज कर दिए, जिससे देश की सिक्योरिटी पर भी असर आ सकता है। अब आप इस न्यूज से शॉक नहीं हो सकते, क्योंकि अडानी ने मोसाद यानी इजराइल की खुफिया एजेंसी तक का यूज किया है। अब ऐसी खबरें आपको मीडिया So is this the reason? क्या ये एक जो अमेरिका के साथ अदानी का जो पोल खुला है, उसके लिए देश की सुरक्षा, देश की रणनीति, देश की विदेश नीति को खत्म किया गया? आप सोचिए। जाने के पहले फिर मैं यही बताता हूँ, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी क्लियरली पूछा है उनसे, क्या जवाब देंगे आप, क्यों ने आपने कैंसिल किया है, और राफेल गिराए गए या नहीं, और वहां पर क्यों ने आप पहले समाचार दिया था, और ये भी आपने पुष्टि की, और ये भी एक बिग एडमिशन। सबसे बड़ा नुकसान हमारे पहुंच को, पहुंच में शायद रियायत Now he is openly admitting after Operation Sindoor how Pakistan has shelled, but why India is keeping quiet? Then why did you go for ceasefire? That is the $1 million question. Why did you go for ceasefire? You are yourself admitting, then why did you go for ceasefire?
Why? का पानी है। देशवासियों, कुछ दिन पहले आपने पीएम मोदी के मुंह से बीकानेर वाला वो चुनावी भाषण तो सुना ही होगा, गरम सिंदूर बह रहा, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरी नसों में अब गरम लहू नहीं, सिंदूर बह रहा है और पाकिस्तानी आतंकियों को हमले की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन कब? जब वो पाकिस्तान के साथ सीज फायर कर चुके हैं। आतंकी मसूद अजहर, हाफिज सईद, दाऊद इब्राहिम और पहलगाम के आतंकियों का सीज फायर में कोई जिक्र तक नहीं है। क्या मोदी देश को मूर्ख समझते हैं? अमेरिका हमारे युवाओं को बेड़ियों में बांधकर अमृतसर में पटक गया, तब वो सिंदूर वाला लहू कहाँ था? Let's stop it. Let's stop it. अमेरिका कहता है हमने जंग रुकवा दी, तो पीएम मोदी चुप क्यों है? वो टैरिफ को लेकर धमकी पर धमकी दे रहा है, लेकिन लगता है कि सिंदूर वाला खून पानी बन गया है। चीन ने गलवान वैली में भारत की सेना पर हमला किया, जिसमें भारत के कमांडिंग ऑफिसर समेत 20 सैनिक शहीद हो गए। लेकिन जिसकी रगों में सिंदूर बह रहा था, वो कहता है कि ना वहां कोई हमारी सीमा में घुसा हुआ है, ना ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। ये खून नहीं पानी है, चुनाव जीतने की कहानी है। नसों में सिंदूर ने Now you know, China has officially in encroaching Ladakh area alongside the other north. It is confirmed by Minister of External Affairs. Even then, no one dared to discuss in the parliament, nor Jaishankar resigns. That is the problem. That is the problem with India. Now, before I say bye, I just wanted to again give you the latest as to how Russia signs $2.6 billion deal with Pakistan. First time, and we are counting S-400s of Russia to fight Pakistan. Is it not a big, big failure? And then here, grass but get a nuclear bomb. This is a country that is surviving on bailouts, World Bank but increasing its military is budget. about 40 Does billion the World investment. Bank really believe that Pakistan would prioritize childhood stunting or climate resilience over its terror factories? By investing in Pakistan, the World Bank is investing in the terrorism they export. This is the reality of Pakistan, where This is the reality of Pakistan. But World Bank is investing on them. Is it not a big failure of India's foreign policy? Now, what are they speaking now? Whom are they trying to? This is the biggest. terrorists are shielded by the state, where the army chief is on posters alongside Now, IMF, World Bank, now Russia. Is it not shaming India? कुछ ही घंटों के बाद उसकी फ्लाइट टेक ऑफ करती है और वो रेड कारपेट बिछी हुई रैली को संबोधित करता है और बिहार के लोगों को अंग्रेजी में संबोधित करता है, और उससे अगले दिन वो सारे बॉलीवुड के इन भांडों के साथ में बैठ के नौटंकी कर रहा है। समझ में इन जो बॉलीवुड एक्टर पैक्टर नहीं थी, इनके साथ नहीं बैठा था क्या ये? तो क्या कर रहा था वहां पे वो? मतलब देश के ऊपर इतना गंभीर वो चला हुआ है। इसने अपने गुंडे लगा रखे हैं फेसबुक के ऊपर कि कोई भी अगर इसके खिलाफ बोले या सवाल उठाए तो उसको देशद्रोही साबित कर दो। हम जैसे लोगों को ट्रोल कितना किया गया फेसबुक के ऊपर, आपने देखा नहीं, लेकिन मतलब हमने सवाल ही तो खड़ा किया कि ठीक है, हमने मान लिया कि आतंकी थे, मतलब तो जाने क्यों दिए तुमने? जिम्मेदारी किसकी है वहां पर? सुरक्षा कारणों में चूक कैसे हुई? और तुम फिर रैली कैसे अटेंड कर सकते हो? और तुम इन बॉलीवुड के साथ मतलब ये रंगरलियां बनाने वाला काम कैसे कर सकते हो तुम? अगर देश के अंदर इतनी बड़ी विपदा आई हुई है,
तुम्हारे ही ट्रोल करने वाली सेना बोल रही है, 2 रुपए प्रति कमेंट करने वाले लोग बोल रहे हैं। वो जब इसको इतना ज्यादा राजनीतिकरण कर रहे हैं और हर किसी को अटैक कर रहे हैं, जो भी आदमी सरकार से सवाल पूछ रहा है, उस वक्त तुम मौज कैसे कर सकते हो? ये पूछना बनता है देश का और उसको जवाब देना बनता है। लेकिन मजाल है कि 2014 से लेके आज 11 साल में एक सिंगल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी हो हरामखोर ने। खा रहा है हमारे टैक्स के पैसे से मौज कर रहा है और एक सवाल का जवाब देने की हिम्मत नहीं। अपना मन की बात, तन की बात, पता नहीं क्या क्या बकवास करता रहता है। सारे अखबारों को, मीडिया चैनलों को विज्ञापन दे दे के उनको अपने हिसाब से मौज कर रहा है। अपने हिसाब से कुछ भी लिख के दे देते हैं, जो वहां के कार्यालय से लिख के चला जाता है। पहलगाम में अटैक होने के कुछ ही घंटों के बाद उसकी फ्लाइट टेक ऑफ करती है और वो रेड कारपेट बिछी हुई रैली को संबोधित करता है और बिहार के लोगों को अंग्रेजी में संबोधित। The language may be, but why did Modi go to Bihar to address after such incident? Was elections important? You want to take an advantage like Pulwama? Then why was he interacting with Bollywood artists when the entire nation should have been mourning? Why Amit Shah allowed his son to conduct IPL matches continuously? Even today, when I'm making a show, still it's going on. When nation should have been mourning, and he himself says for the first time after independence, Poonch and Rajouri also, we lost precious lives and they were attacking mandirs, masjids, churches, gurudwaras. Is it not a shame? Where is nation mourning? And again, Modi comes to Kerala and to hand over to commission Adani's project. That is how all public sector units to Adani's and all oil to formal industries to Ambani. Is this the way? The Khadwa project in Gujarat, bordering with Pakistan, is it the major one on which even the corruption charges were laid by America? Is that the reason India surrendered to America? And is that the reason why, after such a long partnership with India, for the first time, Russia openly comes out and signs 2.6 billion deal when money is more important with Pakistan? Is it not a failed foreign policy, failed security policy, failed internal security policy, and failed strategic war strategic policy? रणनीति में फेल, विदेशी नीति में फेल, आंतरिक सुरक्षा नीति में फेल। अब प्रधानमंत्री हो या अमित शाह हो या जयशंकर हो या नीतीश कुमार बिहार पार्टी या चंद्रबाबू नायडू तेलुगुदेशम पार्टी जो सपोर्ट करता है इनको, क्या ये लोग जिम्मेदार है? हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस फेल्ड फॉरेन पॉलिसीज? नाउ इंडियन मॉनेटरी फंड funding Pakistan, World Bank with $40 billion, it is already funding Pakistan, and Russia signs 2.6 billion treaty with Pakistan. And till 2018, is it not a fact that Pakistan was a terrorist state? How after 2018, Pakistan came out of the terrorist state mode? Who is responsible? Why there is no discussion on the floor of parliament or panchayat? Nation wants to know who is responsible. Is it Prime Minister Modi who has to resign, or Mr. Amit Shah who has to resign, or Jaishankar who has to resign, or the political parties who are supporting, they should withdraw? It is a collective failure because it is shaming India for the first time since independence in our foreign policy. No SARC, no country is supporting India, and all of a sudden a terrorist state like Pakistan. I'm shocked. How is that World Bank is investing $40 billion, saying in the name of development of terrorism against India, killing innocent people? It's a shame. And how International Monetary Fund has openly loaned Pakistan during Operation Sindoor when innocent Indians were killed in Pahalgam and in the shelling in Poonch and Rajouri. I'm straight away asking them, are they not precious lives? Like you, International Monetary Fund and all those world countries, and how India having 2.3% failed there also, why government still continues? And similarly, why America has to pressure India to submit? Can we do it with Mexico also similarly?
America in its relation with Mexico. Then how is that India was made or strangled? Is it just because of Adani Ambani's business deals? I've given you one Kadwa project in Gujarat, from where the corruption charges were levied, including the Andhra Pradesh SCCI project. Is India paying heavily just because of these Gujarati businessmen, their business deals at the cost of India's security, India's sovereignty, and India's foreign policy, which was very intact, independent? And even in Balochistan, when Balochistan wanted India to support them, Modi is keeping quiet. This is a failed foreign policy because it is only Gujarati businessmen, business deals at the cost of national security, national foreign policy, and India altogether. That means all citizens and their resources. Anyone can share their evidences to differ with me. My number is 9440465339. I am ready to host you from wherever you are, provided you come out clean with all the evidences as per rule of law, Constitution, Invoking Evidential Act, as I have shown through these videos. Why BJP or Nitish Kumar or Chandrababu Naidu, and including RSS, keeping quiet when Mallikarjun Kharge clearly states that Modi has prior information on such attacks in Kashmir. That is why he cancelled Kashmir visit and he has gone to Saudi Arabia. And after the attack, he slowly comes again into election mode, attends election rallies, and next day with cine celebrities and comes to Kerala to inaugurate for Adani. Why no one is questioning? Why IPL matches are still going around? Nation should have been mourning. Now Amit Shah admits on Poonch and Rajouri, so many innocents have been killed. Nation shouldn't mourn. And as if this is not enough, Pakistan is gaining support day by day. International Monetary Fund, World Bank, now Russia, who has been the thickest partner, honest support from Russia, and trustworthy Russia today enters into 2.6 billion deal with Pakistan, a terrorist state till 2018, still harboring terrorists, still goes in the name of religion, expanding. But how is the world supporting Pakistan? Did we not fail? Is it not shaming India, right from internal security to foreign policy? So that is why, is it Prime Minister Modi, Amit Shah, Jai Shankar, or the supporting parties Nitish Kumar or Chandrababu Naidu? Who is going to take the call? This is for today. Thank you very much. Do support DRTSPA channels, Citizens DRTSPA channel, and Environment People DRTSPA channels, as they are all in larger public interest only. Jai Bharat. Again, I say Jai Hind, Jai Jawan, and without Kisan, we don't get food. Jai Kisan. मेरे भारतवासियों को ये मेरी प्रणाम।